मार्केट। आज हम लोग सेक्शन 12 के ऊपर एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50। विच फैक्ट्स आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 12? ऑप्शंस है द फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। द फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग्स। सी द फैक्ट शोइंग ए मोटिव इन जनरल विदाउट कनेक्शन टू द मैटर इन क्वेश्चन। डी फैक्ट शोइंग अनरिलेटेड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पार्टीज। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है इसमें ए और बी दोनों। आइए अब हम लोग इसका रीजंस देख लेते हैं। सेक्शन 12 कहता है कि मेंटल स्टेटस जैसे इंटेंशन, नेग्लिजेंस, गुडविल और बॉडली स्टेट्स जैसे हेल्थ कंडीशंस रेलिवेंट होते हैं जब वो सीधे फैक्ट इन इशू हो। क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट डज एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 12 रिक्वायर? पहला ऑप्शन है a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of the mind exists not generally but in reference to particular matter in question. B a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show general behavior of the person. C the fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show unrelated financial condition. D a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show the handwriting of the person. तो हम लोगों का इसमें करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए। द फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉ ये डिमांड करता है कि मेंटल स्टेटस का संबंध किसी स्पेसिफिक इशू से होना चाहिए, ना केवल किसी व्यक्ति के सामान्य कैरेक्टर या बिहेवियर से। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट डज एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 12 प्रोवाइड? तो पहला ऑप्शन है वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section. The previous conviction of such person shall also be a relevant fact. B. Where upon the trial of the person accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is also irrelevant. Option C. Where upon the trial of person accused of an offense, the previous conviction of such person shall never be relevant. Option D. Where upon the trial of person accused of an offense, the previous conviction of such person shall only prove financial condition. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Where upon the trial of person accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section. The previous conviction of such person shall also be a relevant fact. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 12 पहले के कन्विक्शन को रेलिवेंट मानती है यदि पिछले कन्विक्शन प्रेजेंट मैटर में इंटेंशन, नॉलेज या स्टेट ऑफ माइंड दिखाने के लिए रेलिवेंट हो तो। आइए अब हम लोग इलस्ट्रेशन पे क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इलस्ट्रेशन ये है ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen. Question number 53. In a trial where A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen, it is proved that he was in possession of a particular stolen article.
What is relevance of the fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles? पहला ऑप्शन, it is irrelevant as it amounts to evidence of bad character before character has been put in issue. Option B, it is relevant as standing to show that he knew each and all of the articles of which he was in position to be stolen. Option C, it is irrelevant unless a prior conviction for a similar offense is proved against A. D, it is relevant only to determine the amount of punishment to be inflicted. तुम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज रेलिवेंट एज स्टैंडिंग टू शो दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वाज इन पोजीशन टू बी स्टोलन. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यदि किसी व्यक्ति के पास केवल एक चोरी की वस्तु मिले तो वह ये कह सकता है कि उसने गलती से खरीदा था और उसे उसके चोरी के होने का पता नहीं था. लेकिन यदि उसी समय उसके पास कई अलग अलग चोरी की वस्तुएं मिले तो ये संयोग लगना मुश्किल हो जाता है. यह तथ्य उसके गिल्टी नॉलेज को साबित करने में मदद करता है. यहाँ पे इसकी गिल्टी नॉलेज को मदद करता है. अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग to another person a counterfeit currency which at the time when he delivered it he knew it to be counterfeit. The fact that at the time of its delivery A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant. The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as a genuine a counterfeit currency knowing it to be counterfeit is relevant. अब इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ए इज अक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग काउंटरफिट करेंसी टू अदर पर्सन knowing it to be counterfeit at the time of delivery. Which of the following fact is are relevant under this? पहला ऑप्शन है the fact that at the time of its delivery A was possessed of number of other pieces of counterfeit currency. B, the fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit currency knowing it to be counterfeit. Option C, both A and B are relevant. Option D, neither A or B is relevant. तुम लोग का करेक्ट आंसर होगा C, both A and B are relevant. अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ए को पनिश करने के लिए प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होगा कि ए को पता नहीं था कि नोट नकली थे और उसने उन्हें गलती से नहीं चलाया. उसी समय ए के पॉकेट से और नकली नोट मिलना दुर्घटना की संभावना को कम कर देता है. साथ ही में पहले इसी अपराध में उसकी कन्विक्शन ये दिखाती है कि उसे नकली नोट के बारे में जानकारी थी और उसने ये जानबूझकर धोखा दिया. मतलब उसने इंटेंशनल फ्रॉड किया. आइए अब हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं. A sues B for damage done by dog of B. A sues B for damage done by dog of B, which B knew to be ferocious. The fact that dog had previously bitten X, Y, and Z, and they had made complaints to B are relevant. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि A sues B for damage done by B's dog, alleging that B knew that dog was ferocious. A wants to prove that dog had previously bitten X, Y, and Z, and they had complained about it to B. How does the law treat this fact? पहला ऑप्शन, they are irrelevant because X, Y, and Z are not parties to the suit between A and B.
they are relevant as showing B's knowledge of the ferocious nature of the dog. C, they are irrelevant hearsay unless X, Y, and Z are called as witness in the court. D, they are relevant only if dog bit X, Y, and Z in presence of A. तो करेक्ट आंसर होगा B. They are relevant as showing B's knowledge of the ferocious nature of the dog. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ए को केस जीतने के लिए ये साबित करना होगा कि बी को पहले से पता था कि उसका कुत्ता खतरनाक है, लेकिन उसने उसे कंट्रोल नहीं किया. लेकिन यदि कुत्ता पहले एक्स, वाई और जेड पर हमला कर चुका था और उन्होंने इसकी शिकायत बी से की थी, तो इससे साबित ये होता है कि बी ने अपने कुत्ते की हिंसक आदतों से पूरी तरह से परिचित था. आइए हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं. The question is whether A, the acceptor of bill of exchange, knew that the name of payee was fictitious. The fact that A had accepted other bills drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the payee if the payee had been a real person is relevant as showing that A knew the payee was a fictitious person. The question is whether A, the acceptor of bill of exchange, knew that the name of the payee was fictitious. What is the relevance of the fact that A had accepted other bills drawn in the same manner before they could have been physically transmitted to him by the payee if the payee had been a real person? Option देख लेते हैं हम लोग. It is irrelevant as it relates to transaction involving a separate bill of exchange. It is relevant as showing that A knew that payee was a fictitious person. It is relevant only if the payee was subsequently discovered and brought before the court. D, it is irrelevant because it is based on mathematical impossibility rather than legal proof. तुम लोग का करेक्ट आंसर होगा B. It is relevant as showing that A knew that the payee was a fictitious person. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं. अगर पेई वास्तव में कोई व्यक्ति होता तो दूर रहता तो ए तक दस्तावेज पहुंचने में और उसके सिग्नेचर होने में समय लगता. लेकिन ए असामान्य रूप से जल्दी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर देता है, तो ये दिखाता है कि वो किसी रियल व्यक्ति का इंतजार नहीं कर रहा था. लेकिन यह पैटर्न साबित करता है कि ए पहले से जानता था कि पेई केवल एक इमेजिनरी पर्सन है. आइए अब हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं. इसमें क्या है? ए इज अक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी by publishing an imputations intended to harm the reputation of B. The fact of the previous publication by A respecting B showing ill will on the part of A towards B is relevant as proving A's intention to harm B's reputation by the particular publication in question. The fact that there was no previous quarrel between A and B and that A repeated the matter complained of as he heard it are relevant as showing that A did not intend to harm the reputation of B. क्वेश्चन क्या है? A is accused of defaming B by publishing an imputation intending to harm B's reputation. The prosecution wants to submit evidence of previous publication written by A about B to show A's ill will. What is the legal relevance of this fact? पहला ऑप्शन, it is relevant as proving A's intention to harm B's reputation by a particular publication in question.
It is irrelevant because the past statement cannot prove a present offense of defamation. It is relevant only to determine the measure of damage or the gravity of punishment. C. It is irrelevant unless A has already been convicted of those previous publications. तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ए. आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द सेम डिफेमेशन ट्रायल ऑफ ए, द डिफेंसेस इंट्रोड्यूस facts showing that there was no previous quarrel between A and B, and that A merely repeated the matter complained of exactly as he heard it. How are these facts treated by the law? पहला ऑप्शन, they are irrelevant because repeating a defamatory statement is identical to inventing it. They are relevant as showing that A did not intend to harm the reputation of B. They are relevant only if A can conclusively prove that who originally started the rumor. They are irrelevant character evidence that cannot be admitted in criminal trial. तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी. They are relevant as showing that A did not intend to harm the reputation of B. जो क्वेश्चन नंबर 57 और 58 है, दोनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ ही दिया हुआ है. आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. डिफेमेशन केस में ये जानना जरूरी होता है कि ए के दिमाग में क्या चल रहा था. यदि ए महीनों से बी के बारे में बुरी बातें लिख रहा था तो ये उसकी इलविल को दिखाता है. इससे साबित होता है कि उसने नया अपमान भी जानबूझकर बी को नुकसान पहुंचाने के लिए पब्लिश किया था. दूसरी ओर यदि ए और बी के बीच में पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ और ए ने केवल सुनी सुनाई बात आगे बढ़ा दी तो ये दिखाता है कि उसका बी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. तो हम लोगों का दोनों एक्सप्लेनेशन इसमें हो गया. 57 और 58 दोनों का एक्सप्लेनेशन इसी में हो गया. आइए हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. A is sued by B for fraudulent representing to B that C was solvent, whereby B, being induced to trust C, who was insolvent, suffered loss. The fact that at the time when A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbors and by persons dealing with him is relevant as showing that A made representation in good faith. Question है, B sues A for fraud, claiming A lied about C having money, being solvent, which caused B to trust C and lose money. A argues he genuinely believes C was rich. Is the fact that C's neighbor and the business partner also thought C was rich relevant? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं. It is irrelevant. Hearsay regarding what neighbors thought about C's financial conditions. It is relevant as showing A made representation in good faith. It is relevant only if neighbors are added as co-defendant to the civil suit. It is irrelevant because A had a strict duty to check C's bank record personally. तो ऑप्शन होगा बी. It is relevant as showing A made the representation in good faith. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बी ए पर फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन का आरोप लगा रहा है. यदि पूरे मोहल्ले और बाजार के लोग सचमुच मानते हैं कि सी अमीर है तो ये स्वाभाविक है कि ए ने भी यही माना होगा. इससे साबित होता है कि ए ने जानबूझकर धोखा नहीं दिया बल्कि उसने ये विश्वास किया जो बाकी लोग करते थे.
आइए दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग. A is sued by B for the price of work done by B upon a house of which A is the owner. By the order of C, a contractor. A's defense is that B's contract was with C. The fact that A paid C for the work in question is relevant as proving that A did in good faith make over to C the management of work in question, so that C was in a position to contract with B on C's own account and not as an agent for A. Question: B builds a house for A on the order of contractor C. When B demands his money, A says, "Go ask C, my contract was with him, not you." Is this fact that A had already paid C for this specific construction work relevant to the case? Option A. It is irrelevant to B's claim because an owner is always liable for improvement made to their property. B. It is irrelevant because a transaction between A and C cannot affect B's right to receive wages. C. It is relevant as proving that A did, in good faith, make over to C the management of the work in question so that C was in a position to contract with B on C's own account and not as agent for A. D. It is relevant only if B signed the waiver releasing A from all financial liabilities. तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का सी. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बी ये साबित करना चाहता है कि सी ए का एजेंट था. यदि ए एक रसीद दिखा दे कि उसने अपने पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के लिए सी को पहले ही पेमेंट कर दिया था, तो ये दिखाता है कि ए ने पूरी ईमानदारी से पूरा कॉन्ट्रैक्ट सी को दे दिया था. इसलिए सी ए का एजेंट नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था. आइए अब हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं. A is accused of dishonest misappropriation of property which he had found, and the question is whether, when he appropriated it, he believed in good faith that the real owner could not be found. The fact that the public notice of the loss of the property had been given in the place where A was is relevant as showing that A did not in good faith believe that the real owner of the property could not be found. The fact that A knew or had reasons to believe that the notice was given fraudulently by C, who had heard of loss of the property and wished to set up a false claim to it, is relevant as showing that the fact that A knew of the notice did not disprove of A's good faith. Question number 61. A finds a lost item and keeps it. He is charged with dishonest misappropriation. A claims that he honestly believed that the true owner could not never be located. The prosecution proves that flyers and public notices about the lost item were distributed all around A's location. What is the legal status of the public notice? Well, option. It is irrelevant unless the prosecution proves A physically read every word of the notice. B. It is relevant as showing that A did not in good faith believe that the real owner of the property could not be found. C. It is irrelevant because losing an item terminates the owner's legal right over it. D. It is relevant only if the notice offered a specific monetary reward for its return. तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का बी. It is relevant as showing that A did not in good faith believe that real owner of the property could not be found. इसका भी एक्सप्लेनेशन 62 के साथ ही देख लिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 62. In the same case, assume A knew about the public notice but kept the item anyway because he had solid reason to believe that notice was put up by the fraudster C who wanted to steal it.
How does the law treat A's knowledge of C's fake notice? Well, option, it is irrelevant because A should have handed the property over to the police regardless of C's fraud. It is irrelevant because an accused cannot use the fraud of a third party to excuse their own theft. C, it is relevant as showing the fact that A knew of the notice did not disprove A's good faith. It is relevant only D. It is relevant only if A actively confronted C regarding the fake notice before keeping the property. The correct answer is C. It is relevant as showing the fact that A knew of the notice did not disprove A's good faith. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि आपको एक वैलेट मिलता है और आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये किसका है, लेकिन पुलिस ये साबित कर दे कि मालिक ने आपकी गली में बड़े बड़े लॉस्ट वॉलेट के पोस्टर लगाए थे, तो आपका बचाव कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन आप ये साबित कर दें कि आपको पता था कि सी एक फ्रॉडस्टर है और गलत तरीके से वॉलेट का दावा कर रहा है, तो आपका ये बिहेवियर को समझा दिया जाता है। आइए अब हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन क्या है कि ए को चार्ज किया गया है बी के ऊपर। हाँ, पूरा पढ़ लेते हैं। ए इज चार्ज विथ शूटिंग एट बी विथ इंटेंट टू किल हिम। इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंट द फैक्ट ऑफ एज हैविंग प्रीवियसली शॉट बी मे बी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 63। A is charged with shooting at B with intent to kill him. The prosecution attempts to introduce evidence showing that A had shot at B on a previous occasion. What is the legal status of the fact? A, it is inadmissible as it amounts to evidence of a completely separate criminal offense. B, in order to show A's intent, the fact of A's having previously shot at B may be proved. C, it is admissible if A was successfully convicted for previous shooting. D, it is inadmissible character evidence under civil proceedings. तो करेक्ट आंसर है हम लोग का बी। इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंट द फैक्ट ऑफ एज हैविंग प्रीवियसली शॉट एट बी मे बी प्रूव्ड। तो आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि ए बी पर गोली चलाता है तो ये कोर्ट में कह सकता है कि ये दुर्घटना थी, लेकिन यदि प्रोसिक्यूशन ये साबित कर दे कि ए पहले भी बी पर गोली चला चुका है तो दुर्घटना वाला बचाव कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इससे ए की बी की ओर को मारने की पुरानी मंशा साबित होती है। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। A is charged with sending threatening letters to B. Threatening letters previously sent to A to B may be proved as showing the intention of the letters. A is accused of sending threatening letters to B. The prosecution submit as evidence other threatening letters that A had sent to B in the past. How does the law treat these past letters? Option A, they are irrelevant because each letter constitute an independent transaction. B, threatening letters previously sent by A to B may be proved as showing the intention of the letter. C, they are relevant only if they were sent within 24 hours of the letters in the question. D, they are irrelevant unless B can prove he suffered actual psychological harm from them. तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का बी। थ्रेटनिंग लेटर्स प्रीवियसली सेंड बाय ए टू बी में बी प्रूव्ड एज शोइंग इंटेंशन ऑफ लेटर्स। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कभी कभी जो शब्द होते हैं वो स्पष्ट हो सकते हैं, मीन्स क्लियर नहीं होते हैं या मजाक कह के टाले जा सकते हैं, लेकिन यदि ए बी को डराने वाला लेटर भेजता है और कहता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था,
लेकिन कोर्ट देखती है कि ए पहले भी लगातार बी को धमकी भरा लेटर भेजता रहा है, तो पुराने लेटर ए की असली मोटिव को उजागर कर देता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज बीन गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स बी हिज वाइफ। Expressions of their feeling towards each other shortly before or after the alleged cruelty are relevant fact. Question क्या है? The question before the court is whether A has been guilty of cruelty towards B, his wife. The prosecution offers evidence regarding the statements, letters, or conduct expressing the couple's feeling towards one another just before and just after the dates of the alleged cruelty. Are these expressions admissible? Option A. They are irrelevant hearsay unless recorded by the magistrate. They are irrelevant because post facto conduct cannot prove a prior act of cruelty. C. Expression of their feeling towards each other shortly before or after the alleged cruelty are relevant facts. C. D. They are relevant only if they consist of physical marks or medical evidence of trauma. तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का सी। The expressions of their feeling toward each other shortly before or after the alleged cruelty or relevant fact. आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैरिज में क्रुएलिटी अक्सर एक सिंगल आइसोलेटेड इवेंट नहीं होती है, बल्कि एक लगातार चलने वाला बिहेवियर होता है। इसलिए कोर्ट ये देखता है कि ये जो एलिज्ड एक्ट है के आसपास पति पत्नी एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। यदि वे पहले या बाद में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल थे, डरे हुए थे या दुखी थे, तो ये कोर्ट को समझने में मदद करता है कि वास्तव में क्रूरता या क्रुएल्टी हो रही थी या नहीं। The question is whether A's death was caused by poison. Statement made by A during his illness as to his symptoms are relevant fact. The question before the court is whether A's death was caused by poison. The prosecution wishes to submit a statement that A made to his doctor and family members while he was sick, describing what he was feeling. What is the legal status of the statement? A. They are irrelevant hearsay because A is dead and cannot be cross-examined. B. Statement made by A during his illness as to his symptoms are relevant fact. C. They are relevant only if they explicitly name the person who administered the poison. D. They are irrelevant unless recorded in writing by a medical professional. तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी। स्टेटमेंट मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज फिजिकल सिम्टम्स आर रेलिवेंट फैक्ट। तो हम लोग इसका ये देख लेते हैं, इसका रीजन क्या है। जब कोई व्यक्ति जहर से मर रहा होता है तो उसका शरीर कैसे रिस्पॉन्स देता है, ये महत्वपूर्ण एविडेंस हो जाता है। यदि वो कहता है मेरा पेट जल रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, तो ये उसके शारीरिक और मानसिक हालत की स्थिति को बताता है और कोर्ट को समझने में मदद करता है कि वास्तव में क्या हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 67, नहीं इसके पहले इलस्ट्रेशन है। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ एट द टाइम व्हेन एन एश्योरेंस of his life was affected. Statements made by it as to the state of his health at or near the time in question are relevant fact. The court question ये है, the court needs to determine what the state of A's health
was at the time when an insurance policy assurance on his life was secured. A made certain verbal or written statement regarding how he felt physically around that date. How does that the court treat this statement? पहला ऑप्शन है दे आर इरेलीवेंट बिकॉज एन इंश्योरेंस मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट इज ओनली वैलिड प्रूफ B. They are irrelevant self-serving statement that cannot be used for the benefit of his state. C. Statement made by A as to the state of his health at or near the time in question are relevant fact. D. They are relevant only if they are made under oath before the magistrate. तो करेक्ट आंसर है हम लोग का सी स्टेटमेंट मेड बाय ए एज टू द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ और near the time in question are relevant fact. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय अपनी बीमारी छिपाई थी तो कोर्ट को यह देखना होगा कि उस समय ए अपने दोस्तों परिवार या डॉक्टरों से अपनी सेहत के बारे में क्या कहता था। इससे उसकी वास्तविक शारीरिक स्थिति का पता चलता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। A sues B for negligence in providing him with a car for hire not reasonably fit for use, whereby A was injured. The fact that B's attention was drawn on other occasion to the defect of that particular car is relevant. The fact that B was habitually negligent about the cars which he led to hire is irrelevant. क्वेश्चन ये है हम लोगों का A sues B for negligence after being injured by a defective rental car provided by B. A wants to prove two things. First, that the other customer had previously complained to B about that exact car faulty brakes. Second, that B is generally a lazy businessman who never fixes anything of his rental car. Which of these facts can court accept? तो पहला ऑप्शन है both facts are completely irrelevant because past actions cannot prove a current accident. B. The fact that the B's attention was drawn on other occasion to the defect of that particular car is relevant. The fact that B was habitually negligent about the cars which led him to hire is irrelevant. C. The fact that B was habitually negligent about the cars which he led to hire is relevant. The fact that B's attention was drawn on other occasion to the defect of that particular car is irrelevant. D. Both facts are fully relevant as to show B's overall bad character. तो करेक्ट आंसर है हम लोगों का बी द फैक्ट दैट बीज अटेंशन वॉज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन to the defect of that particular car is relevant. The fact that B was habitually negligent about the cars which he led to hire is irrelevant. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग कि नेग्लिजेंस के केस में ए को यह साबित करना होगा कि बी को इसकी विशेष कार की खराबी का पता था। यदि किसी ने बी से कहा था कि कार नंबर 123 के ब्रेक खराब हैं तो इससे यह साबित होता है कि बी को खतरे के बारे में जानकारी थी, लेकिन यह कहना कि बी समान रूप से लापरवाह व्यक्ति है इस विशेष दुर्घटना को साबित नहीं करता है। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंसली शूटिंग हिम डेड। The fact that A on other occasions shot B is relevant as showing his intention to shoot B. The fact that A was in habit of shooting people at B with intent to murder him is irrelevant. Question number 69. A is standing trial for intentionally shooting B dead. The prosecution bring forward two pieces of evidence that
A had shot at B twice last year and that A is dangerous criminal who was in habit of shooting at random people according to section 14 rules. What is the legal status of the evidence? पहला ऑप्शन, the fact that A was in habit of shooting at people with intent to murder them is relevant. The fact that A was on the other occasion shot at B is irrelevant. B, both facts are relevant to show that A is in danger to society who deserves punishment. C, the fact that A on other occasions shot at B is relevant as showing his intention to shoot B. The fact that A was in habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant. D, both facts are completely inadmissible as they violate rules against character evidence. तुम लोग का करेक्ट आंसर होगा सी, द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी इज रेलिवेंट एज शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी. द फैक्ट दैट ए इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विथ इंटेंट टू मर्डर देम इज इररेलेवेंट. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यदि आप पर बी की हत्या का आरोप है तो ये फैक्ट कि आपने पहले भी बी पर गोली चलाने की कोशिश की थी ये साबित करता है कि आपके मन में बी के प्रति विशेष मैलिस है और उसे मारने की इंटेंशन है. लेकिन ये कहना कि आप सामान्य रूप से हिंसक व्यक्ति हैं, इससे हत्या को साबित नहीं कर सकता है. आइए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ए इज tried for a crime. The fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is relevant. The fact that he said something indicating a general disposition to commit crime of that class is irrelevant. Question number 70. A is tried for breaking into B's house and stealing a safe. The prosecution want to present two statements made at A at local bar. Statement first, I am planning to crack B's house safe this Friday. Statement 2, I love stealing from rich people house. It is easy money. What अब क्वेश्चन क्या है? What is the admissibility of this statement? Statement 1 is relevant as indicating as intention to commit that particular crime. Statement 2 is irrelevant as indicating a general disposition to commit crimes of that class. Option B, statement 2 is relevant as showing a professional criminal mindset. Statement 1 is irrelevant unless it is backed by an eyewitness. C, both statements are fully relevant to show A's continuous state of mind. D, both statements are completely irrelevant as loose talk cannot be counted as legal evidence. तो हम लोग ऑप्शन ए होगा इसका. Statement 1 is relevant as indicating an intention to commit that particular crime. Statement 2 is irrelevant as indicating a general disposition to commit crimes of that class. यदि आप कहते हैं कि मैं बी के घर में डकैती डालने वाला हूं तो ये स्टेटमेंट सीधे आपके माइंड को उस वास्तविक अपराध से जोड़ता है, इसलिए ये बहुत रेलेवेंट होता है. लेकिन यदि आप केवल समान रूप से ये कहते हैं कि आपको अपराध करना पसंद है और या चोरी करना अच्छा लगता है तो सिर्फ ये आपकी जनरल डिस्पोजिशन को दिखाता है. लॉ केवल यह साबित करने कि आपकी प्रवृत्ति समान रूप से बेईमान है तो आपको किसी विशेष चोरी के अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. तो थैंक यू गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए. हम लोग सेक्शन 12 ऑफ बीएससी के एमसीक्यूज कर लिए हैं. अब सेक्शन 13 और 14 हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में होगा. तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत